Hello everyone, my name is Niyati. I hope you all are doing really good. As we know, backtesting is the most utilized secret weapon in trading. After all, backtesting is one of the most important aspects of developing a trading plan. So, if you want to gain some reassurance or extra confidence that your strategy is worth following, before you actually risk your own money, you can try backtesting it. You can try backtesting it with the help of advanced backtesting platform called as Backinzo. It helps you find the effectiveness of a multi-leg trading strategy employed in the past and helps estimate its future performance. Before I take you to the walkthrough of Backinzo, I would like to thank Algobaba for helping us shape our tree. Algobaba is our technology partner. Now coming back to the Backinzo. Backinzo is a desktop-based application. It safeguards your logic, your strategies rather than getting posted on any third-party servers. So unlike many backtesting platforms available out there in the market, which may eventually compromise your security and your valuable logics. So definitely, as a backtest operator, I mean, if you have logic, if you have something which is core, you would not like it to be disclosed over internet or expose it to the third party server. So backinzo means backtesting in your own zone, and that's what it stands for, and that gives you 100% privacy and lets you enjoy backtesting in your own comforting environment. Plus, everything stays local and safe within your own PC. Okay, so with the let's talk about the installation. Installation, I have already explained to you in the previous video. You can refer that video for the installation process, and the installation link is given in the description box of that video. So you can click that link in order to download Backinzo. Right now, the link is available only to the Stoxo paid users. But in coming days or the due course of time, it will be released to generic users as well. So if you are a Stoxo paid user, you will have access to it, right? As I just said that right now only the paid Stoxo users can access Backinzo. So with the same Backinzo user ID and password, you can enter Backinzo as well. Okay, with the same Stoxo user ID and the password, you can enter Backinzo as well. Okay. Before installation, make sure that your C drive have at least 10 to 20 GB of the free space available. Plus, we have mentioned minimum system requirement criteria. It's mentioned in the video itself. Okay, you can refer that video for the minimum system requirement. So after entering the user ID, Stoxo user ID and the Stoxo password, just click on remember and I agree button and click on the sign in button. The moment I click on the sign in button, it may take few minutes. And now you can see a beautiful interface of Backinzo. We keep coming up with the updation, okay, frequent updation. We believe in the frequent updation. So whenever it asks you to update Backinzo, do it without the fail. Okay, do it without the fail. Now, as you can see that there are headers, multi-leg, user setting, strategies, position, order book, and backtest result. In order to understand Backinzo in the more simplest manner, let's understand the app structure first. Okay. Backinzo allows only one user at a time, okay? But under one user, you can have n number of strategy tags. आप कितने चाहे strategy tags बना सकते हैं. Strategy tag is nothing. It's a mechanism of grouping multiple option portfolios. So you can make n number of strategy tags. There we have casted no limit onto it. Under a strategy tag, you can make n number of portfolios, okay, strategies. So you can make n number of portfolios, and there also we have casted no limit onto it. But under portfolio, there are legs.
So we have casted a limit of 8 legs. So Backinzo allows 8 legs, maximum 8 legs. Okay, so this is the hierarchy of Backinzo. At the top hierarchy, user comes, and maximum one user can be there. Okay, as of now. But under user, they can be have multiple strategy tags wherein we can group our multiple option portfolios. Suppose I have a strategy wherein I only buy, then I can define it as a strategy tag long. Okay. Suppose there is a strategy wherein I only short or I only sell, then I can define it as a strategy tag sell. Similarly, you can make a strategy tag Nifty, Bank Nifty, or Fin Nifty, whatever your choice. Okay. So under the strategy tag, there comes multiple portfolios. Multiple portfolios can have maximum 8 legs. Okay. So at the strategy tag level and the portfolio level, there is no limit. Yes, there is no limit. Now coming back to the backend zone. We'll first understand the user setting. Go to the user setting. यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर क्योंकि आपने स्टॉक्सो की आईडी से एंट्री ली है, राइट? नाउ यू कैन सी हियर, क्लिक हियर टू ऐड न्यू रो. ओके, यहाँ पे अगर आप ऐड भी करना चाहोगे ना तो ऐड आप कर नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम देना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं निया नाम देना चाहती हूँ, द मोमेंट आई क्लिक ऑन द एंटर बटन इट विल नॉट अलाउ. सी इट डिलीटेड इट, right? So as you know that you just have limitation of one user as of now in Backinzo, so यहाँ पे आपको वो allow ही नहीं करेगा to add any other user. Okay, अब देखिए यहाँ पे यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, यूजर एलियास, यूजर आईडी, यूजर स्क्वायर ऑफ टाइम, यूजर मैक्सिमम प्रॉफिट, यूजर मैक्सिमम लॉस. तो ये सब आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं. Okay, now once I'm done with the user setting, I will move on to the strategy tag. This is the second field, okay, which I'll move on to. As you know, our hierarchy, it's 4-level hierarchy. At the top hierarchy, there comes user, below that is strategy tags, below that portfolios, and below that legs, right? So user settings I've already shown you. Now once done with the user setting, we'll move on to the strategies. Okay, so strategies where you can have n number of strategy tags because it's up to you, right? We have casted no limit onto the strategy tags. You can group as many option portfolios as you want. Okay, तो strategy tag मैंने जैसा बोला कि ये एक मैकेनिज्म होता है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियोज को ग्रुप कर सकते हो. ग्रुपिंग करके कुछ कंट्रोल पैरामीटर्स भी आप सेट कर सकते हो, सच एज मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट लॉकिंग फीचर. ओके, तो ये सब चीजें आप ग्रुपिंग करके कंट्रोल कर सकते हो. ओके, तो आपने देखा कि आप यूजर्स पे भी कंट्रोल कर सकते थे, आप स्ट्रैटेजी टैग्स पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? Can you see this written here? Click here to add new row. So if you click on this, you can make strategy tags as many as you want. Like मैंने यहाँ पे apart from default मैंने यहाँ पे strategy tag long का बनाया हुआ है, right? But जो भी strategy tag में आपको अपनी trading back test का देखना है result, then you have to click on the enable button. Please make sure that it is enabled, because if it is not enabled, then it will not allow you to आपको ट्रेड्स लगेंगे ही नहीं, और ट्रेड्स नहीं लगेंगे तो बैक टेस्टिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मल्टी लेग. ओके, now the main games starts from this option, this field, that is multi-leg. Herein you will see a add portfolio ka button, right? If you click on this add portfolio button, a beautiful interface will come in front of you. Okay, see, I'm gonna click on it. So yes, it's an option portfolio execution. Now the Backinzo is divided into 4 sections. Okay, it is divided into 4 sections in order to simplify and more understandable. I will divide it in the 4 sections. The first section is the default portfolio settings. Second is the
leg, and third is the execution parameter, and the fourth is option portfolio name and saving. Okay, now we'll cover the first portfolio, that is default portfolio setting. That is the first section of the Backinzo. We'll go step by step. You can see ample, fields, so don't be scared. I'll explain you in the more simplest manner. Okay, now we'll cover the first section, and first section, that is default portfolio settings. You have these fields: symbol, expiry, default lot, predefined strategies, strike selection, underline, price type, strike step, and these fields. Okay, so we will be covering only these fields of the first section first. Okay, now the first is symbol, right? यहाँ पे आपको ये symbol दिख रहा है. Symbol में it's a mandatory field. Okay, it's a mandatory field. आपको यहाँ पे कुछ तो enter करना पड़ेगा ना, in order to have the back test result of it, right? So here at the symbol you can select option tradable symbol here. Once you start typing, it will suggest you with the exact exchange symbol. For example, अगर मैं यहाँ पे type करूँगी Nifty, NIF, तो आपके सामने ये निफ्टी आ गया, राइट? यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर. सपोज मुझे बैंक निफ्टी चाहिए या फिन निफ्टी चाहिए, तो मैं BANK टाइप करूंगी एंड बैंक निफ्टी विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. सो हियर इट यू कैन सेलेक्ट दैट. नाउ सपोज मुझे फिन निफ्टी में इंटरेस्ट है. किस में इंटरेस्ट है? फिन निफ्टी में. एंड सी फिन निफ्टी, राइट? सो आवर Backinzo, as of now, it supports 3 indices. One is Nifty, Bank Nifty, and Fin Nifty, and 7 stock options. Try to limit yourself, right? So 7 stock options we have given you: Reliance, HDFC, HDFC Bank, and SBIN. Okay, so see, HDFC. So HDFC and HDFC Bank has come in front of you. Reliance. So all heavyweight, most preferred ones we have given you. The 7 stock options, these are here. So you can select it of your choice. So suppose as of now I want to go ahead with the Nifty. So I'll just click on the Nifty. Okay, I'll just click on the Nifty. Now comes another field of the first section. ये first section है हमारा default portfolio setting. The first was the symbol, which is a mandatory field. अच्छा, you must have noticed while moving the cursor, मैं जहाँ पे भी hold कर रही हूँ, एक tool tip आपके सामने आ जा रहा है, right? So this simplifies your life. If you are stuck somewhere, then you can go to this section, that is help. Okay, you can read the help document and most probably आपकी जो भी queries है वो solve हो जाएंगी यहाँ पे help document से. Okay, now coming back to the second field of a default portfolio setting, and that is expiry. So if you click on this drop down, this drop down will contain all expiries for selected symbols. Backinzo supports dynamic expiries. Okay, current expiry is the weekly one. Next expiry is considered as weekly one. Next to next expiry is considered as weekly 2. And the last, that is the fourth expiry of the month, is considered as monthly. Monthly one is the next monthly expiry, and monthly 2 is the next to next monthly expiry. So we support all expiries for the selected symbol. Okay, so Backinzo supports multiple dynamic expiries, unlike other backtesting platforms. Here you can choose lot. Okay, and then comes the fourth field, that is called as predefined strategies. This drop down will contain most commonly used option strategies such as short straddle, short strangle, iron condor, long butterfly, call ratio spread, put ratio spread. Almost all popular it will strikes आपको यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी. यू कैन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी ऑफ योर चॉइस एंड Backinzo will populate desired strike automatically based on your strategy. So suppose I want to fire and see the backtest result of a short straddle. The moment I click on the short straddle, आपको ये वाले सेक्शन पे आपको नजर
ही डालनी है. Just keep an eye over this section. The moment I click on the short straddle button, it will automatically populate the strikes of it. So short straddle में हम ATM का PE cell करते हैं और ATM का CE cell करते हैं. So see, the moment I clicked on the short straddle, it has automatically populated the strikes of it, right? So it will populate desired strike automatically based on your strategy. So these are the predefined strategies. Now coming to the next field of the first section of the Backinzo, that is default portfolio settings, right? So the next field is strike selection. So here for the strike selection right now, there are three options available. First is normal. So if I click on the normal button, आपको यहाँ पे जो strikes है ये normal मतलब this is like a basic selection like you do everywhere at your broker end, at your broker terminal, right? You can select exact strike amount that could be OTM, ITM, ATM for the leg and that remains constant. So if you click on this, आपको ये जो blue band दिख रहा है ये आपका ATM हो जाएगा और ये वाली स्ट्राइक्स यहाँ से आप स्ट्राइक में नॉर्मल स्ट्राइक सिलेक्शन में आप स्ट्राइक को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द second option of the strike selection, that is relative. See, the moment I'm gonna click on the relative button, ये strike ATM में convert हो जाएगी. Okay, just see, have a look. Now it is converted into ATM, right? So in this case, strike will be relative to ATM. Suppose you selected ATM plus 100 and currently मान लेते हैं आपका जो निफ्टी है, let's say आपका जो निफ्टी है वो अभी चल रहा है मान लेते हैं 16,900 पे. ओके, और मैंने अगर ATM plus 100 को सेलेक्ट किया है स्ट्राइक को. ओके, ATM plus 100, तो ये ऑटोमेटिकली किसको कैलकुलेट कर लेगा और कौन सा चूज कर लेगा? 17,000. ओके, because I have chosen this ATM plus 100. Okay, so that's the reason it will calculate and select the plus 100 wala strike. Okay, now see, the moment I click on the relative button, आपको यहाँ पे ATM ये दिख जाएगा, right? Blue band is indicating you the ATM. अब यहाँ पे आपको ATM -50, ATM -100, -150, इधर पे इस साइड की तरफ आप आएंगे तो +50, +100, +150 and so on आपको देखने को मिलेगा, right? So in this relative strike selection, in this case, strike will be relative to ATM. Okay. So many traders they prefer using this relative strike selection. Okay, now let's talk about the both option. That is the third option of the strike selection. This will be dynamic and strike will be changed at the time of execution. So suppose I click on the both button. Now you will see that if you click on this leg strike, तो आपको ऊपर की तरफ ATM देखने को मिलेगा, right? बोथ मीन्स यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है? दैट ATM में भी रिलेटिव में भी रहेगा और स्ट्राइक्स में भी रहेगा. सो दिस विल शो यू बोथ द ऑप्शन. फर्स्ट इट विल शो यू रिलेटिव दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATM एंड व्हेन यू स्क्रॉल इट डाउन, जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे आपको स्ट्राइक्स भी मिल जाएंगी. यू विल सी स्ट्राइक्स एज वेल. सो दिस फीचर विल बी हेल्पफुल इन केसेस वेयर फ्यू लेग्स ऑफ द ऑप्शन यू वांट टू बी रिलेटिव लाइक ATM plus 100 में and few as per strike. So this both feature of strike selection is helpful in such cases. Basically this feature is for those who want few dynamic and few static strikes. Okay, so this is for those. Right now to make it simpler for you, I'll just click on the normal. Okay, तो मैं normal पे click करूंगी तो मेरे strikes आपको normal ही दिखेंगे. मेक श्योर दैट यहाँ पे ये जो स्ट्राइक सिलेक्शन है यहाँ पे ATM के ऊपर आपको 20 स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी एंड ब्लू बैंड दैट इज ATM के नीचे आपको 20 स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी. ओके, नाउ let's move on to the next field of the first section of the Backinzo, that is underline. So if you click on the underline, see, there are two options. One is a spot, another is future. Different traders, they have different needs. Some use future, some use the spot as underline. Personally, I prefer futures. Okay, so I'll just click on the futures. Okay, suppose you want to click on a spot, then
we have made it available for you. So here you can specify which you want to use as underlying. Now comes the price type. See, price type, it does not have any much relevance in the backtesting, but in case of live execution, it matters most. Okay, so but still we have made available for you, that is LTP and bid and ask. We'll skip this bid and ask average, but LTP if we talk about, so Backinzo allows you to select different price type depending upon your strategy requirement. First is LTP, that is last traded price. It is being used everywhere as price. So if you select LTP, then Backinzo will use LTP everywhere, from calculating current value to check stop loss, target, or for placing limit orders. Okay, and order flow analysis जो traders करते हैं उनके लिए bid and ask का भी parameter available है. So bid and ask, depending upon the buy and sell, Backinzo will automatically use bid and ask in place of LTP. The significance of this feature is that it can control some slippages. Okay, so you can click bid and ask in order to skip the, in order to control the slippages. Okay, now let's move on to the strike step. So strike step, here you can specify the strike you want to select. For example, if you want to use only 100 strikes for Nifty, then you can enter 100 here. So for Nifty, मिनिमम 50 स्ट्राइक शुड बी देयर. तो अगर मैंने यहाँ पे 50 को चूज किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी वो 50 के स्टेप्स पे देखने को मिलेंगी, यानी 16,900. तो 16,950 विल बी अनदर स्टेप, देन 17,000 and then 17,050. So because I have defined here strike step as 50. For example, if you want to use only 100 strikes for Nifty, कुछ ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें सिर्फ 100 के स्ट्राइक स्टेप्स चाहिए. सो इफ दे वांट टू यूज ओनली 100 स्ट्राइक्स फॉर निफ्टी, देन यू कैन एंटर 100 हियर. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको 100, यू कैन मेक इट 100. तो जैसे ही आप 100 करेंगे, आपको यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं 16,900 से के बाद 17,000, राइट. 17,000 के बाद 17,100. So you can use your desired stepping value, which will select strike only in the multiplication of stepping value. For Nifty, minimum 50 should be the strike step, and for Bank Nifty, minimum 100 should be there. See, यहाँ पे I have chosen Nifty as my symbol. So if I enter here as 25, तो अगर मैं 25 करूँगी ना, it will show me the error. See, strike spread should be in the multiple of 50, so it has shown me the error, right? So for the Nifty, minimum 50 should be the strike spread. Okay, so suppose मैंने यहाँ पे 50 का strike step choose कर लिया. Okay, now let's move on to the next advanced fields of it. For example, यहाँ पे एक दूसरी field है, move SL to cost, buy trades first, allow far strikes, implied futures, free extra protection, and Greek premium leg. Okay, so these are the advanced fields of the option strategies. Now let us understand first move SL to cost. इसको पहले समझ लेते हैं. See, this feature is only applicable for multi-leg option strategies where you have stop loss for one individual leg. Suppose आपने आपकी मल्टी लेग ऑप्शन पोर्टफोलियो आपने प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी से आपने आयरन कोंडोर फॉर एग्जांपल बैक टेस्ट करना है. तो आयरन कोंडोर, एज वी नो दैट इट हैज 4 लेग्स. तो सपोज आपके एक लेग का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सपोज द एसएल गेट हिट फॉर एनी ऑफ द लेग, ओके, कोई भी एक लेग का अगर stop loss get hit, then in that case Backinzo will move SL to all other active legs जो भी आपके profitable होंगे at that point of time to its break even point. तो जितने भी बाकी के 3 active legs या जो भी 3 profitable legs हैं, उसको वो break even point पे shift कर देगा. So है ना कमाल का एक risk management feature, right? Now let's move on to the I'll keep it simple for the because it's a walkthrough, so I'll keep it simple. Short straddle pay, which is a 2-legged strategy. I'll show you how you can save portfolio and how you can backtest it. Okay, so now comes the
buy trade first. Okay, so buy trade, in order to get better margin benefits, option traders, they prefer buying the buy order legs first and then sell orders after some delay. Okay, so this features works very logically, and it keeps a delay of at least 1 second between buy and the sell order. So for entry order, it is like always suggested to place buy order leg first, right? हमेशा buy को हम पहले, buy legs को पहले execute करते हैं and then sell orders को करते हैं in order to get better margin benefits, right? So this, if you click on this buy trade first को अगर आप click करोगे, तो अगर आपकी कोई strategy है जिसमें बाय के भी कुछ लेग्स है और कुछ सेल के भी लेग्स है, तो सबसे पहले ये बाय के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद आपको सेल के लेग्स एग्जीक्यूट करेगा. ओके, नाउ इफ आई क्लिक ऑन द अलाउ फॉर स्ट्राइक में क्या होगा, एज आई सेड दैट नॉर्मल में इफ यू डोंट क्लिक ओके ऑन द अलाउ फॉर स्ट्राइक, तो आपको जो नॉर्मल स्ट्राइक्स होंगे उसमें ATM के above 20 स्ट्राइक्स मिलेंगे और ATM के with this blue band is the ATM, उसके नीचे आपको 20 स्ट्राइक्स मिलेंगी. But if you click on this allow for strike, then it will show you 40 strikes above ATM and 40 strikes below ATM. Okay, so this is optional feature. Default Backinzo shows usually 20 strikes up down in the strike selection drop down, as I just showed to you. However, if you want to trade some far off strikes as well, so if you tick here, यहाँ पे अगर आप tick करते हो, then Backinzo will show you up to 40 strikes up and down, as I just showed you. But to make it simple, I'll just untick this because I don't want to, I don't want far off strikes. Now this implied future I will skip, but I will cover it in the detailed video, okay, later on. Now let's move on to the value all types. Value all types, it is a read only field that shows current combined premium value including lot size of the selected leg. यहाँ पर ये आपको वैल्यू ऑल लॉट और वैल्यू पर लॉट, यहाँ पे आपको दो फील्ड्स दिख रही होंगी, राइट? दीज टू फील्ड्स, दे आर रीड ओनली फील्ड्स. ओके, दे आर रीड ओनली फील्ड्स. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेग का ये प्रीमियम है, राइट? दिस इज द फर्स्ट लेग एंड दिस इज द सेकेंड लेग ऑफ द शॉर्ट स्ट्रैडल, क्योंकि हमने शॉर्ट स्ट्रैडल को चूज किया है. सो इफ यू सी हियर, वैल्यू ऑल लॉट जो ये वाला फीचर है, ये आपको मतलब इट्स अ जस्ट रीड ओनली फील्ड दैट शोज यू करंट कंबाइंड प्रीमियम वैल्यू इंक्लूडिंग लॉट साइज ऑफ द सिलेक्टेड लेग. फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट स्ट्रैडल किया है, तो यहाँ पे जो भी LTP होगा, LTP यानी ये जो प्रीमियम है, तो फर्स्ट LTP इज of the first leg is 102 and another is 99 यानी 99. If you plus this, okay, so this comes out to be this, right? Understood? So 201. So it will show you the value of the all lots in the value all lots. So if you want to refresh it, या अगर आपको थोड़ा सा भी LTP में कुछ भी गड़बड़ लग रहा है, then you can refresh it. Okay, आप इसको refresh कर सकते हो और 102.90, 99.90 comes out to be 202.80, right? Okay, now for credit legs, देखिए जो भी आपकी credit legs होते हैं जहाँ पे आप selling करते हो, right? जो भी आपके credit leg है, तो यहाँ पे तो हम दोनों ही legs को sell कर रहे हैं, तो value will be shown in negative. आप यहाँ पे negative में value देख पा रहे हैं, -202.80, right? और अगर debit leg है तो value will be shown in positive. Okay, please note that. So यहाँ पे short straddle is a credit strategy and that's the reason value or lot is displaying in the form of negative. Okay. Now
लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू पर लॉट। अभी एक बार वैल्यू पर लॉट की भी बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो अ रीड ओनली फील्ड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इट शोज करंट कंबाइंड प्रीमियम एज पर सिंगल लॉट। ओके, फॉर द सिंगल लॉट, इसका नेम itself is suggesting you it's straight, right? Value per lot. So it shows you combined premium as per single lot for the better readability for the selected legs. Okay, this will show the value as per single lot only. Okay, please remember that. Remember, for the credit legs, this will show value in the negative, and for the debit legs it will show you in the form of positive. Okay, now let's move on to a very beautiful USP of Backinzo, and that is premium Greek leg. Okay, premium Greek leg is a beautiful feature. With this feature you can add some normal legs and some Greek based leg. अभी आप यहाँ पे शॉर्ट स्टैडल पे देख पा रहे हो कि 2 legs ही हैं, राइट? अभी इन 2 legs में अगर मुझे एक तीसरा leg ऐड करना है, so I'll just click on this, I just tick on the premium Greek leg and click on the add leg. The moment you click on the add leg, आपको ये वाला leg भी appear हो जाएगा. With this you can even execute delta neutral strategies. If you want to select a strike depending upon the value of the Greek, then tick this. यहाँ पे आपको ये सिर्फ एक tick करना है and just click on the add leg button. This will add a new leg. जैसा कि यहाँ पे एक leg ये पूरा new add हो चुका है. राइट नाउ, इन प्लेस ऑफ स्ट्राइक सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे आपको इन 2 लेग्स में और ये वाले लेग्स में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, एक्सेप्ट वन थिंग विच इज दैट स्ट्राइक। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको स्ट्राइक का ये फील्ड दिख रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट? बट दिस फील्ड इज डिफरेंट इन केस ऑफ ग्रीक लेग, राइट? यहाँ पे जो ग्रीक लेग है उसमें सिर्फ इन प्लेस ऑफ स्ट्राइक सिलेक्शन यू कैन सी दैट यू कैन सेलेक्ट द वैल्यू रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट डायनामिक स्ट्राइक। यहाँ पे आप, दिस इज द बेनिफिट, राइट? सो I'll just show it to you. If you click on this button, you can you have multiple around 6 fields in the value under value type. So if you click on this, you will find premium, nearest premium, delta, IV, implied volatility, theta, and nearest delta. Okay. So based on that, matlab how strikes are selected. Suppose your condition is is to select premium. अगर मैं प्रीमियम को सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, अगर मुझे प्रीमियम करना है एंड आई वांट कि मेरा जो प्रीमियम होना चाहिए वो 95 से 100 के बीच में, यहाँ पे आपको एक वैल्यू देना पड़ेगा, एक रेंज देनी पड़ेगी. सो बिटवीन 95 एंड 100 कितनी डेप्थ तक मतलब it will calculate from the ATM. So Backinzo will start checking from the ATM and it will try to check for the condition. Okay, तो मैंने कहा कि ठीक है 10 डेप्थ तक देख लो, और मैंने ये फिर आपको ये डिफाइन करना है कि साइड कौन सा साइड में जाएगा. So here you can set depth side. Suppose you only want to select leg in the side of ITM या फिर in the side of OTM. Okay, so Backinzo will check only ITM or OTM till max depth which you have defined. If you want to select both, then you can select both as well. Okay, this way you can select the premium. Okay, यहाँ से आप premium को कर सकते हैं, and then comes our next that is nearest premium. Okay, so this can be used to select nearest premium, possible premium. Suppose you have entered nearest premium value as 100. अगर आपने 100 मान लीजिए यहाँ पे आपने nearest value 100 को एंटर किया, राइट? आपने बोला कंडीशन कि अबव इक्वल 100 हो या फिर बिलो इक्वल 100 हो या फिर एनी भी चलेगा. ओके, एनी विल वर्क. मैक्सिमम डेप्थ एटीएम से कैलकुलेट करके वो आपको बताएगा. सो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 5 डेप्थ तक आपको यहाँ पे बोथ साइड में अगर आपने क्लिक किया, इफ यू हैव सेलेक्टेड द बोथ साइड, सो फॉर द 5 डेप्थ 100 का जो भी नियरेस्ट प्रीमियम होगा इट विल ट्राई टू कैलकुलेट इट फॉर यू. ओके, सो सपोज मान लेते हैं कि एक 70 निकल के आया, एक 150 निकल के आया और एक 85 निकल के आया. ओके, एक 85 निकल के आया. ओके, नाउ मैंने क्या डिफाइन किया था कि भाई मेरा नियरेस्ट प्रीमियम 100 होना चाहिए. नाउ 100 के करीब क्या 70 है? नो.
100 के करीब क्या 150 है? नो, बट 100 के डेफिनेटली करीब है 85, राइट? सो इट विल कैलकुलेट, इट विल ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा 85 वाले नियरेस्ट प्रीमियम की स्ट्राइक को, राइट? सो दिस वे you can add Greek legs or premium legs. Okay, now let's move on to the next value type, because already 6 value types are there. So suppose delta की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा में सपोज आपने बोला कि मुझे, बिकॉज इट्स अ स्ट्रैडल मैंने किया हुआ है, तो मान लेते हैं कि अगर मेरे को, मैंने बोला 0.5, ओके, 0.5, ओके, 0.5 से 0.80, I'll make it 6, wait, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डेल्टा की भी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल बिटवीन एंड वैल्यू देनी है। साइड आपको चूज करनी है कि आपको किस साइड पे करना है, आईटीएम में करना है कि ओटीएम में करना है, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो एक चीज का बस ध्यान रखिएगा, अगर सीई का लेग है, जैसे ये सीई का लेग है, मान लीजिए सीई का लेग है अगर, तो सीई का डेल्टा शुड बी इन पॉजिटिव एंड पीई का डेल्टा शुड बी इन नेगेटिव। तो अगर ये मान लीजिए अगर ये पीई होता और आप यहाँ पे डेल्टा चूज कर रहे होते, तो आपको यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाना पड़ता, ओके। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, okay, is that clear? So it is important to note that CE delta should be in positive and PE delta should be in negative, okay. Similarly आप nearest delta को भी choose कर सकते हैं। nearest delta में भी this can be used to select nearest possible delta. Suppose you have entered nearest delta value as 0.3, मान लेते हैं आपने 0.3 और ये सीई का लेग, तो सीई का के लिए तो पॉजिटिव होता है, राइट? तो यहाँ पे सीई में अगर आपने 0.3 का दिया है फॉर द सीई लेग, नाउ द बैकेंजो विल चेक फॉर द डेल्टा ऑफ ऑल द स्ट्राइक्स एज सेलेक्टेड इन द मैक्सिमम डेप्थ, whichever is nearest to 0.3 delta which you have defined will be selected, okay. So it's pretty clear. I will cover it in the explanatory videos, okay, but for the walkthrough it's enough, I think, right? So this way you can add Greek legs also. I'll just cancel it in order to just simplify it, okay. In order to simplify it, I'll just cancel this, okay. Now it is now clear, right? So the first section of the Backinzo is pretty clear. This is the first section, right? It is clear. Now the second section is this ID. ID means this will show you the serial number of the legs which can be used on the target and SL action to take action on the other legs. फिर आपका आता है LTP. LTP, this shows current LTP of a strike. You can refresh to latest LTP by clicking on the refresh button here, okay. It is here, so you can click on the refresh button in order to refresh the premiums, okay. It is placed, this refresh button is placed at the top right corner, okay. Now see here the BS button, you can click here to change from buy to sell or vice versa. Suppose मुझे sell को buy करना है, then just click on it and my task is done. So this is the another field of the second section. Now comes CEPE. यहाँ पे CEPE आप जो भी करना चाहें, and even you can change it to futures as well, okay. आप देखिए यहाँ पे आप PE and futures भी कर सकते हैं, right? Okay. And now comes lot. With this you can place actual order lot you want to execute at, जिस पे भी आप, it's completely your choice, right? Completely your choice. Now let's talk about the weekly expiry, okay. तो expiry भी आप यहाँ पे multiple expiries भी support, तो आप यहाँ से भी वो choose कर सकते हैं. And then comes a strike. Depending upon the strike selection, drop down, you can see strike here. You can select required strike from here. क्योंकि मैंने यहाँ पे normal select किया हुआ है, तो मुझे ये normal strike के form में दिखा रहा है, right? Then comes weight and trade. Weight and trade are USP. If you have specified weight and trade, अगर आपने यहाँ पे weight and trade में कुछ value specify किया है, then Backinzo will not take an immediate trade
Rather, it will note the premium and apply weight and trade value, and then it will wait for the newly calculated premium to cross. Okay, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट फीचर है जो कि वेट करेगा जब हमारे वो प्रीमियम क्रॉस हो, मतलब एक जो कैलकुलेटेड प्रीमियम है वो क्रॉस हो, तब तक वो वेट करेगा. सपोज योर शॉर्ट स्ट्रैडल विच यू स्टार्ट एट 9:30, किसी को 9:20 करने की आदत है, किसी को 9:30 करने की आदत है, एंड यू हैव मेंशन्ड वेट एंड ट्रेड एज -1%. आपने वेट एंड ट्रेड को -1% स्पेसिफाई कर दिया. कितना किया आपने यहाँ पे? -1%. ओके, फॉर बोथ द लेग्स. यहाँ पे भी आप फॉर बोथ द लेग्स आप -1% का वो कर सकते हैं. नाउ एट 9:30 विच इज योर स्टार्ट टाइम, जब आपको शॉर्ट स्ट्रैडल को डिप्लॉय करके उसका बैक टेस्ट रिजल्ट देखना है, तो सपोज फर्स्ट लेग आपका मान लेते हैं, एक राउंड ऑफ वैल्यू में ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, कि फर्स्ट लेग का जो प्रीमियम है वो है मेरा 100. तो 100 में -1% का क्या हुआ? 99, राइट? 99 हो गया. एंड फॉर द सेकेंड लेग अगर मैं मान लेती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 150 है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल 150 है, तो 150 का 1% कितना हुआ आपका? 148 point something, okay, 148.5 something. Okay, so for negative weight and trade, when leg LTP becomes equal or less, or positive weight and trade का मतलब Backinzo will place order only when LTP is equal or more than above value. Okay, so this is an excellent feature, USP. Weight and trade. Okay, in order to simplify it, because I am showing it to you for the first time, now comes target. So here also you will see a total 7 fields. Okay, for the target and for the stop loss you will see 7 fields. So if you click on the target, अगर आप प्रीमियम पे सेलेक्ट करते हो, if you select on the premium, तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, एक छोटा सा डब्बा आ जाएगा, एंड दैट इज टारगेट वैल्यू, राइट? इस टारगेट वैल्यू में अगर आपने प्रीमियम सेलेक्ट किया है, देन इन हियर इन यू कैन स्पेसिफाई इन परसेंटेज. आपने बोला कि प्रीमियम के बेसिस पे मुझे 10% का टारगेट चाहिए. कितना चाहिए? 10% का. Always remember that in case of premium, never mention absolute value like 150, 180 as your targets. ऐसा कुछ मत स्पेसिफाई करना, बिकॉज कि अभी आपका प्रीमियम ये चल रहा है और आपको टारगेट्स यहाँ पे आपने सेल किया, राइट? तो आप यहाँ पे सेल में ये चाहोगे कि 102 है तो मेरा 90 आना चाहिए, है ना, या फिर 80 आना चाहिए, तभी मुझे प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इन केस ऑफ प्रीमियम यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई इन परसेंटेज, लाइक I just specified 10%. Okay. Now in case of absolute premium, अगर मैं absolute premium की बात करूँ, तो absolute premium में here you can mention the absolute value. तो अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ absolute value पे, तो यहाँ पे target value को आपको डिफर करना पड़ेगा. अगर 102 आपका लेग है और आपने सेल किया है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 80. ओके, कितना? 80 will be my target value. So here you can mention the absolute value, like 80 मैंने यहाँ पे specify करा as my target. Okay, here do not mention value in point, it has to be an absolute value, please note that. Okay, now let's understand the third field, which is underlying. In this case you can use target SL on the basis of underlying movement too. For example, लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी आपका जो निफ्टी है वो चल रहा है 16,890 रुपए पे. ना इफ यू विश टू बुक प्रॉफिट व्हेन निफ्टी मूव्स बाय 50 पॉइंट्स इन योर फेवर, आपने यहाँ पे सपोज बाय का आप बाय डायरेक्शन में आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो और आपने बोला कि मेरा 16,890 है, यहाँ से ये 50 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चला जाए इन माई फेवरेबल डायरेक्शन. सो अगर मेरा 50 डायरेक्शन ऊपर की तरफ चला गया, 50 पॉइंट्स ऊपर की तरफ चला गया, देन बैकिंजो विल क्लोज दैट पर्टिकुलर लेग, क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट में अंडरलाइन को सेलेक्ट किया था. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर द अंडरलाइन वन.
Now, not just that, you can select delta and theta also. So you can manage your legs, target, and SL with respect to Greek value as well. These can be handy if you want to make delta neutral legs. You can also create leg which can be based on Greek value and set target SL based on the Greek. ठीक है, तो which I will cover it in detail. Don't worry on that front. In upcoming videos, you will get the enough information about the same. Okay, but right now I'll just make it 10% as my target. I'll make it simpler for you, and for this also premium में मैं यहाँ पे 10% का target इसको बोल रही हूँ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस में भी मैं प्रीमियम को चूज कर रही हूँ. इट इज सेम जस्ट लाइक टारगेट. यहाँ पे स्टॉप लॉस की भी फील्ड सेम है ऑलमोस्ट, तो सेम फीचर्स रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैंने एस एल वैल्यू, जैसे यहाँ पे टारगेट वैल्यू था वैसा यहाँ पे एस एल वैल्यू है. एस एल वैल्यू में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे ना 5% का स्टॉप लॉस चलेगा, इस लेग में भी मुझे 5% का स्टॉप लॉस चलेगा. ओके, तो आप इस तरीके से अपनी एस एल की वैल्यू को भी डाल सकते हैं. ओके, सो दिस वे इट वर्क्स. Now let's talk about the trailing टारगेट. ओके, यूजुअली आपने प्रॉफिट जो भी ब्रोकर टर्मिनल्स होते हैं वहां पे आपने ट्रेलिंग टारगेट के ट्रेलिंग को नहीं सुना होगा, राइट? बट Backinzo supports this trailing target. So these two fields which are seen here, profit locking and profit trailing, these two are independent fields. Okay, they are not dependent on each other. Profit locking, अगर मैं बोल रही हूँ if my profit reaches 1000 rupees, मेरा अगर प्रॉफिट 1000 rupees अगर पहुंच जाता है, then lock minimum profit as 500. मतलब मेरे 500 को लॉक कर देना. एंड then every increase in profit by, let's say, अगर 100 रुपीज अगर बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लेते हैं 200 रुपीज अगर बढ़ रहा है, देन ट्रेल प्रॉफिट बाय 120 रुपीज, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द टिक बटन. Please remember the value should be in the rupees only. Locking and this profit locking and profit trailing can be used independently. आप चाहें तो आप इसको नहीं भी डिफाइन करें. ओके, प्रॉफिट ट्रेलिंग को आप नहीं भी डिफाइन करें, आप लॉकिंग के फीचर को भी यूज करके क्लिक कर सकते हैं. ओके, तो सपोज मैंने इसको क्लिक कर दिया, बट राइट नाउ आई डोंट वांट, सो मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ. ओके, आई विल जस्ट लीव दिस स्पेस ब्लैंक. सिमिलरली ट्रेल एसएल में भी आपको फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट बाई आप मेंशन कर सकते हैं एंड ट्रेल एसएल बाई कर सकते हैं, एंड जस्ट क्लिक ऑन द tick button. But please remember that the value can be in case of SL trail, the value can be in the form of point or percentage. Please note that. Okay, but for to keep it simpler, I am not clicking on the trail SL. Okay, I'm just leaving this as blank. Okay, now यहाँ पे आप कुछ भी मतलब लाइक कर सकते हैं. फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट एज 3%, अगर आपको मान लो 3% करना है, और ट्रेल एसएल बाई 1.5%, तो आप इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स अबाउट द ट्रेलिंग. नाउ we'll come to the execution parameter. This is the third section of the Backinzo, right? The first two sections we are done with, right? हमने ये वाला फर्स्ट सेक्शन कर लिया, हमने ये सेकंड सेक्शन कर लिया. नाउ द थर्ड सेक्शन इज दिस वन. नाउ द फोर्थ सेक्शन इज दिस. सो राइट नाउ विल फोकस ऑन द थर्ड सेक्शन. आई विल बी कवरिंग ऑल दीज fields: execution parameter, extra conditions, the settings, monitoring, dynamic hedge, target setting, stop loss setting, and exit settings in detail in the upcoming videos. But because it's a walkthrough video, so I am just limiting myself to the execution setting. Okay, यहाँ पे execution parameter पे आपको select करना है, और execution parameter में you will find the first as product. तो you can choose NRML or MIS. Many traders they prefer NRML. Then comes strategy tag. आपको कौन से strategy tag में है? I have already explained our hierarchy. One user can have multiple strategy tags, so you have to
सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी टैग, जैसे मेरे एक डिफॉल्ट है और एक मैंने एस टी लॉन्ग बनाया है, बट एस टी लॉन्ग शुड बी इनेबल्ड, ओके, तभी आपका उसमें ट्रेड लगेगा और तभी आपका वो बैक टेस्ट होगा। तो अभी मैं इसको डिफॉल्ट पे क्लिक करती हूँ एंड देन दिस फील्ड कम्स इन, इफ वन और more leg fails. In case of multi-legs, there are possibility that one or more legs may fail. However, our Backinzo will retry as per strategy tag re-entry setting. आपने अगर कुछ re-entry setting वगैरह कुछ दिया होगा तो on the basis of that, Backinzo will retry, but still that कैन बी फेल ड्यू टू मार्जिन, हो सकता है मार्जिन की शॉर्टेज की वजह से आपका कोई लेग फेल हो जाए। तो इन केस ऑफ दैट वो आपसे पूछ रहा है कि क्या कीप प्लेस्ड लेग्स करना है। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनी लेग, Backinzo will keep placed order intact and it will further process any pending order leg. Okay, if you click on this button, if you click on the exit placed leg button, then in that case, rejection of any leg, Backinzo will exit all placed legs and it will stop processing for any pending legs also. Okay, तो मैंने इसको keep placed leg पे click कर दिया. Then comes leg execution. Backinzo is fully asynchronous and capable of placing multiple orders at the same time. But for different strategy, traders may have different requirement. तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो you will find parallel and sequential. तो parallel, in case of parallel, Backinzo will immediately place order for all legs parallelly without waiting other legs for completion. In this case, if any leg fails, आपका कोई एक leg fail हो जाता है, then processing of the other legs won't stop, as those are already fired, क्योंकि parallelly चल रहे हैं, right? So it will not stop in that case. Now, if you click on the sequential, अगर आप sequential पे click करते हैं, तो in this case, Backinzo places order after one after other, after getting confirmation of the previous order, or 2 seconds, whichever is lower. Okay, so in this case, if legs get rejected within 2 seconds, then it won't place remaining legs, and it is very appropriate for hedging also, as a order goes in sequence with max wait time or the 2 seconds. Okay, now comes the quantity by exposure. It is completely optional field. Now comes maximum lot. Maximum lot is also, optional field. It can be used with or without quantity by exposure. If filled, then Backinzo will not place order for more lot than the maximum lot. इससे ज़्यादा वो order को fill नहीं करेगा. It will not place order for more lots than the maximum lot. Then comes a beautiful feature, our USP, that is premium gap. तो this applies between leg 1 and leg 2. अब यहाँ पे देखिए ये leg 1 है, ये leg 2 है. तो ये premium gap में आपने premium क्या बोला? इसका first leg का premium है 102 and second leg premium is 99. So if you want to restrict gap between two premiums, then you can use this field. Let's assume you want to short, यहाँ पे आपने straddle को short किया है, but you want premium gap between CE and PE should not be more than 10%. तो आपने बोल दिया कि भाई मेरा ना 10% से ज़्यादा का gap नहीं होना चाहिए इन दोनों के premium के बीच में. Okay, this will execute the portfolio only if both the premium come within the mentioned range, that is 10%. So premium gap to be entered in percentage. Please note that. आपको यहाँ पे इसको percentage में enter करना है. Now it will ask you the entry setting. So entry setting में आपको start time पे click करना है और यहाँ पे आपको timing पूछेगा, like on which day you want backtest of this particular strategy. और जैसे आपने यहाँ पे predefined strategy select किया है, so suppose यहाँ पे मैं select all करती हूँ. Okay, start time मैंने बोला कि मेरा जो straddle होना चाहिए वो for example 9:20 का स्टार्ट टाइम मैंने डिफाइन कर दिया और एंड टाइम मैंने इस फायर कर दिया 3:15 का. सो इन केस ऑफ स्टार्ट टाइम, अब यहाँ पे पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन मोड में आपको स्टार्ट टाइम दिखता है. ऑल दीज फील्ड्स आई विल कवर इन द नेक्स्ट अपकमिंग डिटेल्ड वीडियोस. ओके, in case of the start time, Backinzo will start the execution of the portfolio and the time mentioned under the
स्टार्ट टाइम, यहाँ पे आपका जो भी स्टार्ट टाइम होगा उसके बेसिस पे वो एग्जीक्यूट करेगा, एंड दिस वोंट केयर फॉर द एंट्री प्राइस, या आपके एंट्री प्राइस की परवाह नहीं करेगा। ओके, तो प्रीमियम गैप एक बार मैं क्विकली फिर से आप लोगों को बता देती हूँ दैट दिस अप्लाइज बिटवीन लेग 1 एंड लेग 2। तो अभी स्ट्रैडल में तो 2 ही लेगेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है, तो यहाँ पे तो 2 ही लेग्स है, एंड इसमें आप यहाँ पे प्रीमियम गैप लगा सकते हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट 4 लेगेड स्ट्रैटेजीज लाइक आयरन कॉन्डोर। सो फर्स्ट 2 लेग्स में ये काम करेगा, जैसे आप अगर यहाँ पे आयरन कॉन्डोर पे क्लिक करते हैं, ओके, सपोज यू क्लिक ऑन द आयरन कॉन्डोर, तो आयरन कॉन्डोर में आपको 4 लेग्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 4 लेग्स। अभी ये 4 लेग्स के जो फर्स्ट 2 लेग्स होंगे वहां पे ये आपका क्या करेगा, जाकर उसमें प्रीमियम गैप में कैलकुलेशन करेगा अंटिल प्रीमियम गैप मैचेस विद इन द मेंशन रेंज। ओके, दिस चेकिंग ऑफ प्रीमियम कैप विल बी डन बिटवीन स्टार्ट टाइम एंड द एंड टाइम, मतलब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के बीच में ये चेकिंग चलती रहेगी। सपोज आपका स्टार्ट टाइम यहाँ पे 9:20 है और एंड टाइम आपका यहाँ पे 3:15 है, तो सपोज आपका 9:20 पे मान लेते हैं जस्ट सपोज, ओके, जस्ट सपोज कि जो आपने स्ट्रैडल फायर किया है, I'll make it a straddle, okay, just a second, and it will populate the desired strikes. Okay, the moment I click on the predefined strategy as a straddle tab. Now, suppose मान लेते हैं कि 9:20 पे जब भी मेरे को फायर करना है स्ट्रैडल, तो उस टाइम पे जो एटीएम का सीई है वो कितना है, 200 मान लेते हैं, इट इज 200, ओके, और जो एटीएम का पीई है वो है 250, कितना है, 250, ठीक है, लेट्स सपोज, ओके, लेट्स सपोज। सो प्रीमियम गैप अगर इज 25% विच इज हायर, राइट। सो यहाँ पे कॉज आई डिफाइंड 10%, मैंने यहाँ पे प्रीमियम गैप को 10% दिया था। अब यहाँ पे इन दिस केस बैकिंजो विल कीप चेकिंग द गैप between the two premiums until gap comes within the mentioned range, that is 10%, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10% define किया था, right? So it will keep on testing till the end time, okay? Then only it will place order. Till end time it will wait for the price premium to match, and that is our USP, okay? Which you will not find in any other backtesting platforms. Now comes entry order type. Entry order type में आपको यहाँ पे 3 options देखने को मिल जाते हैं. First is market. Backinzo supports 3 order types. First is market. Order will be placed as market order. और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफ गेटिंग फिल्ड, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड वे फॉर मल्टी लेग एग्जीक्यूशन, बट मे इन्वॉल्व स्लिपेजेस, ये इसमें स्लिपेजेस भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका लिमिट। तो लिमिट, with limit orders you can set limit price, and you can even adjust to the limit price. Limit orders will be placed as per the selected price type by adjusting as per limit price adjust field. यहाँ पे अगर आप limit पे क्लिक करेंगे आपको limit price adjust का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड फील्ड इज SL लिमिट, ये आपके स्लिपेजेस को बहुत कंट्रोल करता है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लिमिट ऑर्डर with one change of wait second. यहाँ पे आपको wait second का एक field देखने को मिल रहा है, right? Internally it places limit order. However, if you have mentioned wait seconds, अगर आपने यहाँ पे बोल दिया कि 10 seconds, for example, 10 seconds, okay? Then if you have mentioned wait seconds, then our Backinzo will check the order after 10 seconds, and if order is still pending, then it will take action as per on the वेट एक्शन सिलेक्शन। यहाँ पे आप वेट एक्शन सिलेक्शन करना मतलब कर सकते हैं कि कैंसिल करना है प्राइस की कन्वर्ट टू मार्केट करना है, ओके। तो दिस वे यू कैन कंट्रोल द स्लिपेजेस एज वेल, ओके। यहाँ पे ये जो आपको वेट सेकेंड्स दिख रहा है ना, ये यू कैन स्पेसिफाई द टाइम टू वेट, यहाँ पे आप कितना वेट करना चाहते हो। बैकिंजो विल वेट टिल स्पेसिफाइड सेकेंड, यानी जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 सेकेंड कर रही हूँ, एंड आफ्टर दैट इट विल check for the order status. If order is not filled or partially filled, then Backinzo will take the action as per the on wait seconds. यहाँ पे जो आपका ये है, right? तो on wait seconds.
अब यहाँ पे आपको देखिए 3 दिखने को मिल रहा है ऑन वेट एक्शन पे, राइट, 3 ऑप्शंस। नन मतलब नो एक्शन विल बी टेकन इफ नॉट फिल्ड, द लिमिट ऑर्डर विल बी लेफ्ट ओपन, राइट। कैंसिल ऑर्डर में if order is not filled at all, then Backinzo will just cancel the order, and if suppose order is partially filled, then it will modify the order to keep executed quantity, and convert to market में क्या होता है, Backinzo will execute the remaining quantity at market, okay। And here at the fourth section you can mention the option portfolio name, okay। जो भी आपका पोर्टफोलियो का नेम आपको स्पेसिफाई करना है। तो चलिए अब मैं इसको बहुत सा सिंपल कर देती हूँ, आपको एक बार क्विकली दिखा देती हूँ कि कैसे हम ईजीएस्ट मैनर में ये सारे सिलेक्शंस करते हैं और कैसे हम सेव पोर्टफोलियो करते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है ऐड पोर्टफोलियो में। इट इज सो स्विफ्ट एंड स्मूथ, ओके। यहाँ पे आपको सिंबल चूज करना है, एक्सपायरी चूज करनी है। सपोज मुझे शॉर्ट स्टैडल करना है तो मैं शॉर्ट स्टैडल पे जाऊंगी। मुझे नॉर्मल ही रखना है बिकॉज मैं आपको सिर्फ एक जिस्ट दे रही हूँ, तो मुझे नॉर्मल रखना है। स्पॉट एज माई अंडरलाइन एंड स्ट्राइक स्टेप एज मान लेते हैं चलिए 100, ओके। ये अनटिक कर दूंगी बिकॉज मेरे दोनों ही जो लेग्स हैं वो सेल है। और यहाँ पे मैंने ऑन टारगेट में मैं बोल दे रही हूँ कि प्रीमियम एंड टारगेट वैल्यू एज 10%, ओके। यहाँ पे मैं 10% कर रही हूँ। इस लेग के लिए भी टारगेट का मैं प्रीमियम चूज करूंगी और 10% स्पेसिफाई कर दूंगी। फॉर द स्टॉप लॉस आई विल सेलेक्ट प्रीमियम, ओके। प्रीमियम फॉर बोथ द लेग्स, ओके, प्रीमियम फॉर द बोथ द लेग्स। और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ 5%। कुछ भी आप कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, बट मैं आई एम जस्ट शो केसिंग यू, ओके। नाउ यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइप में NRML ही रहने दूंगी मैं इसे। पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन में मैं स्टार्ट टाइम पे क्लिक करूंगी। रन ऑन डेज में मैं सिलेक्ट ऑल करूंगी, ओके। एंड आई विल जस्ट नेम इट। This is the fourth section, so I want to name it as Niyati, okay। You can add your remarks। यहाँ पे आप कुछ भी remarks अपना दे सकते हैं कि आपने ये क्यों बैक टेस्ट किया था for so and so reason, and just click on the save portfolio। So see, it's so simple, right? It's saved successfully। Now we'll move on to our दिस मल्टी-लेग हेडर, राइट। मल्टी-लेग हेडर पे आपको यहाँ पे एक फील्ड देखने को मिलेगी। ये 2 पोर्टफोलियोज हैं, एक निया एंड वन इज नियति, राइट। सो यहाँ पे आप को जो भी प्रैक्टिस करना है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। यू हैव टू इनेबल इट, ओके। जस्ट इनेबल इट एंड देन रिकैलिब्रेट इट। यहाँ पे आपको ये रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। इट विल रिकैलिब्रेट द डेटा, ओके। And as you can see, यहाँ पे recalibrate completed भी लिख के आ गया। Now there are 2 test modes. One is simulate and other is backtest. See, simulation is a kind of a live backtesting simulator, you can say, where you can interact with the system. You can, this is actually like Vardhan. This can be used for practice. मतलब आप practice कर सकते हैं। On the contrary, if you click on the backtest, तो आपको from 2019 कि जून का डेटा अवेलेबल है। फ्रॉम 2019 जून से लेके आप करंट डेट यानी 2022 तक का बैक टेस्ट कर सकते हैं। हाउ यू हैवर यू कैन गेट रिजल्ट। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद द system, okay। So suppose मुझे back test करना है, I'll just click on the back test, okay। Now it will ask you from date and to date। तो अगर मैं यहाँ पे specify करती हूँ कि ये देखिए कैलेंडर आपके सामने आ गया। अब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से ये मेंशन दिख रहा होगा। तो ग्रीन कलर्स आर द वीकली एक्सपायरीज एंड ब्लू कलर्स आर द फिन निफ्टी का एक्सपायरीज, ओके। तो सपोज मैंने इसको बोला कि अभी टुडे डेट इज 28 सितंबर, राइट। यू कैन सी दिस क्लॉक हियर। तो मैंने इसको बोला कि मुझे ना ये जो स्ट्रैडल मैंने इसका पोर्टफोलियो बनाया है, इसका पोर्टफोलियो मुझे बैक टेस्ट करना है 1 सितंबर 2022 से। सो आई हैव चोजन हियर from date as 1 September 2022 and to date यानी till date, right। And just click on the play button, okay। The moment you click on the play button, आपका यहाँ पे एक बैक टेस्ट का नेम आपको देना पड़ेगा। Suppose I am giving it as Niyati, you can add your remarks also and just click on the OK button, okay। The moment you click on the OK button, it will try its best to find out the best and accurate
backtest data. Okay, as you can see, this clock is ticking, right? 13 September, backtesting is going on. 14th September, right? So till 28th September, it will backtest. 28th September, right? So within flick of minutes, you will get the backtest result. Within flick of minutes, you will get the backtest result. Isn't that amazing? See, Backtest completed for Niyati. here you go, right? So you just have to go on the backtest result and click on the click here button जो भी आपने नाम दिया था. अभी मैंने 28 को ये वाला पोर्टफोलियो बनाया, राइट? यू कैन चेक द, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 नेम से है, तो 28 सितंबर इज द करेंट वन, राइट? जो कि मैंने अभी आज टेस्ट किया आपके सामने, just to showcase you. So you have to click on the click here button. The moment you click on the backtest result, this will come in front of you. See, यहाँ पे आपका ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब पूरा आपको एक कंप्लीट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा. ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, एवरेज डे में उसने कितना पीएनएल दिया, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट किस दिन हुआ, दैट इज ऑन 23rd September, राइट? 23rd September को मैक्सिमम प्रॉफिट इसको गेन हुआ. मैक्सिमम लॉस इसको 27th September को हुआ, दैट इज -487 रुपीज. टोटल डेज आपका यहाँ पे कितने दिनों में, राइट? विन परसेंटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 डेज में 2 डेज में यहाँ पे विन परसेंटेज है और 2 डेज में यहाँ पे लॉस डेज है, राइट? मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक का मतलब होता है कि कितने कॉन्जिक्यूटिव डेज में आपकी स्ट्रैटेजीज ने रिजल्ट, मतलब अच्छा रिजल्ट, प्रॉफिटेबल जर्नी आपको दी, एक अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रीक दी, राइट? मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक इज 2, राइट? तो इस तरीके से आप ये ब्रेकअप देख सकते हैं. एंड वंस यू स्क्रॉल इट डाउन, आपको पूरा पोर्टफोलियो वाइज ब्रेकअप देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी वाइज ब्रेकअप देखने को मिलेगा. You can even see the monthly breakup, weekly breakup. If you collapse this, यहाँ पे अगर आप collapse करोगे तो आपको सारे जितने भी डेज का बैक टेस्टिंग है ये सब आपको देखने को मिल जाएगा. इफ यू क्लिक ऑन द एक्सपैंड ऑल, तो आपको यहाँ पे ये इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, राइट? पूरा एक ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा. सो ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आई विल कवर इन द मोर डिटेल्ड explanatory mode. Okay, don't worry on that, friend. So that's all about the walkthrough. Now it's your decision whether you want to evolve or dissolve. It's completely your decision. And not just that, you can even see how your strategy performed if you untick this Monday. Suppose you ran this strategy only on the Thursdays, तो Thursday को कैसा दिया? If you have ran on the Wednesday, तो Wednesday को कितना दिया? तो see, your figures are all figures, they are एक अलग फिगर्स देखने को आपको मिल रहे हैं. तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट लेवल पे ये चेंजेस करके देख सकते हैं, राइट? यू डोंट हैव टू परफॉर्म द एंटायर बैक टेस्ट अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि मेरा किस डे में इसने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दी या किस दिन पे इसने मिनिमम दिया. तो इस तरीके से आप रिजल्ट लेवल पे ही चेक कर सकते हैं. सो नाउ it's completely your decision whether you want to evolve or dissolve. So that was all about the walkthrough. Stay tuned for more such videos, more such explanatory videos. Bye bye.